Good morning, students. Today we will start chapter number 14, statistics. First of all, introduction to statistics. What is statistics? So, meaning. What is the meaning of statistics? It is the study of the collection. It is the study of the collection, analysis, presentation, and organization of data. So, what is statistics? So, it is the study of collection. Okay, how you collect the data. Data means what? Okay, let's say your result. Okay, number of subject and whatever the mark you have obtained, that is called data. So, it is the collection. How you collect, how analysis, how you analyze. Okay, after collecting, if you want to analyze, okay, between these कितने student हैं, that is called analysis. Then presentation. If you want to present your data somewhere, so in presentation, if you have collected data carefully, then you can easily present it. And organize. You can organize the data. So, what is data? Data, let's, for example, a mark sheet. Mark sheet of your result, तो that is what collection of data. उसमें subject हो गए and उसके marks हो गए. Then next take a goods price list. Okay, if you go somewhere, let's say for example, if you go to D-Mart, then whatever the bill given to you, उसमें क्या होगा कि goods की price का list होगा कि what is the good and what is the price. This kind of collection is called data. So, to present the data, presentation of data, you can represent data in many ways. So, there are some way we will introduce data. First, you can represent the data using tabular method, table. Then bar graph. Then आएगा बार ग्राफ. उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, and then histogram and pie chart. So you can represent the data in following way. Using tabular method is called table, then bar graph, frequency polygon, histogram and pie chart. We will study all these methods step by step. So first we will study how to represent data using table. How to represent data using table. So let's say for example, you are given marks of 10 students in mathematics. Okay, marks of 10 students in mathematics. Okay, let's say you have marks of 10 students given as 26, 50, 39, 42, 68, 88, 90, 94, 73, and 82. This is the given data. Okay, you are given marks of 10 students in this form. So this kind of form is called raw data. एक ही रो में ये आ गए. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 एंड
उसके मार्क्स आपको दिए हैं, 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, इट इज कॉल्ड रो डेटा, इट इज कॉल्ड रो डेटा। नाउ स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो ये डेटा को आपको इफ यू वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, if you want to arrange this data in ascending order, then you can easily arrange, because number of students are less, only 10 students are there, and if you want to arrange this data into ascending order, the ascending order में we will start from lower value, तो lower value कितनी है 26, उसके बाद you have 39, then 42 के बाद है 50, आफ्टर 50 उससे हायर वैल्यू कौन सी है 68, देन यू हैव 73, देन 82, देन 88, 90 एंड 94. You can easily arrange this data in ascending order or descending order because number of students are only 10. So इसमें आपको कोई भी कलेक्शन करना हो, ascending order में करना हो या descending, you can easily do it because only few students data are given. But what if number of students are more than 30 or students that contain same marks are more than 1? At that time we will use tabular method. So let us consider one example. If you are given data of 30 students, okay, marks of 30 students are given 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88 and 40, 80, 50, 70, 50, 72, 56 and 70, 60, 36, 70, 40, 60, 36, 60 and 40 is 40 and 88. So you are given marks of total 30 students. And if you want to represent this data, then you cannot easily represent this data by this way, by in ascending order, because number of students are 30 and same marks contain students are more than 1. Okay, let's say 10 marks is only for one student, but 70 marks contain students are 1, 2, 3. So for that we require table. You can easily obtain the table. That one column is for marks and then number of students, or it is called frequency. Frequency means how many times it is repeating. तो lower marks कौन से हैं? Let's say 10. उसके बाद 20. आपको पूरा टेबल एनालाइज करना पड़ेगा। 10 के बाद 20 है, then 36, उससे हायर वैल्यू 40, then 50, 56, 60, 70, 72, 60, 70, 72, 80, 88, 92 and 95. 92 and 95. So कितने मार्क्स अवेलेबल है?
तो आपको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो फ्रॉम द टेबल यू कैन फाइंड कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, ओनली 1. देन 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, ओनली 1. देन 36, तो 36 मार्क्स 1, देन 2, देन 36 कहीं पे है, यस 3. तो टोटल स्टूडेंट्स दैट कंटेन 36 मार्क्स आर 3. देन उसके बाद 40, तो 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1, 2, 3 and 4. तो स्टूडेंट्स दैट कंटेन 40 marks are 4. Similarly you can find each number of students, 50, तो 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 3. then 56 2, then 64, 70 marks contain 4 students, then 72 1, 88 marks for student and 2, 92 वाले 3 and 94 5 है 1. तो this way you can represent the data कि 10 marks कितने स्टूडेंट्स के, 1 स्टूडेंट्स, 20 1 स्टूडेंट्स, 36 marks 3 स्टूडेंट्स के. तो ये जो डेटा आपको दिया है उसको आप कंप्रेस कर दिया इन द टेबुलर फॉर्म, तो आपको एक लिस्ट मिल गया कि मार्क्स 10 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है, 20 वाला 1 स्टूडेंट है. तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर मेथड. तो इन द टेबल यू कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा. सो इससे ये इजी हो गया. इफ यू हैव टेबुलर फॉर्म, इफ यू आर नॉट गिवन दिस डेटा, देन आल्सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट के 1, 20 कितने के 1. So this is called tabular method. Same way, in same question, if we modify the table, how we modify? तो हमने लोअर लिमिट कितनी है मार्क्स की, 10, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 95. तो हम क्या करेंगे कि जो मार्क्स है उसको सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे. तो लेट्स टेक मार्क्स, फर्स्ट कॉलम है मार्क्स, उसके क्लास बनाएंगे एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स, हम टैली करेंगे मार्क्स को एंड लास्ट में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो क्लास मार्क हम कैसे कर रहे हैं, तो हमने रेंज बता दी कि 10 एंड हाईएस्ट कितने हैं, 95. हम वी विल डिफाइन वन रेंज कि 10 to 50, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55. Similarly, you can go up to 95. Now, हमने क्लास डिफाइन कर दी है. ना हमको क्या चेक करना है कि बिटवीन 10 to 15 कितने स्टूडेंट्स हैं. बिटवीन 10 to 15 में ओनली 1 स्टूडेंट्स इज देयर. तो टैली मार्क्स के लिए हम एक लाइन करेंगे, ओनली 1 स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी है 1. देन बिटवीन 15 to 20 ओनली 1 स्टूडेंट इज देयर. सो अगेन यू टैली ओनली 1 मार्क, सो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 1. नाउ बिटवीन 20 to 25, यहाँ पे देखिए बिटवीन 20 to 25 कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी उसकी होगी 0. देन 25 to 30 के बीच में, बिटवीन 25 to 30 देयर इज नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मार्क नहीं होगा, अगेन एंट्री आएगी 0. नाउ बिटवीन 35 to 40, 30 to 35 देयर इज आल्सो नो स्टूडेंट्स, again you will get 0. then between 35 to 40 तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 36 वाले 3 है प्लस 40 वाले 4 है, तो you will get 7. तो एंट्री कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7, so you will get 7. Similarly between 40 to 45, between 55 to 40 you can match the entry and frequency.
So this is the way that in tabular form you can represent your data. So this is the first method, that is table form. Okay, how you represent your data in tabular form. Let's take one more example. Okay, already you are given one table. You are given one table. The total 38 students data is given. Total students 38 है, तो उसके वेट से एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 31 to 35 में स्टूडेंट्स है 9. then 36 to 40 में स्टूडेंट्स है 5. 41 to 45 students are 40. then 46 to 50 the students are 3. then 51 to 55 one student. 56 to 60 two students. then 61 to 65 two students. 66 to 70 one student, and 71 to 75 total students है 38. now so these are called class. These are called class. So first of all, let us consider the concept of upper limit and lower limit of class. So let's say, for example, we have taken second class, that is 36 to 40. So 36 is called lower limit. The lower limit of class is 36. Similarly, upper limit is 40. So this way you can define lower limit is 36 and upper limit is 40. But here classes are not continuous. Why? Because upper limit of first class is 35 and lower limit of second class is 36. So it is not called continuous classes because यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 36 है. Continuous कब होगा? when यहाँ पे 35 होगा तो यहाँ पे भी 35 आना चाहिए. So to make these classes continuous, first of all find the difference of upper limit of second class and lower limit of first class. तो difference कितना होगा? 36 minus 35. So you will get total difference is 1. Now if you want to make this class continuous, then simply difference divide by 2. So that is equal to 1 by 2. 0.5. You will get 0.5. So add this value to upper and lower limit of all classes. If we add 0.5 to the 0.5 add to the value of upper limit and subtract to the lower limit of class. So what we will get? So new class is lower limit में क्या करना है? 0.5 subtract करना है. तो 31 minus 0.5. So you will get 30.5. upper limit में add करना है तो 35.5. Same way lower limit में 0.5 subtract करो, so you will get 30
35.5, upper limit में ऐड किया 0.5, so you will get 40.5. Similarly do for all classes, so you will get 40.5, 45.5. now your classes are all continuous because अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं है. जो भी previous class की upper limit होगी that should be the lower limit of next class, then this class are called continuous class.